Salutations to you, the all-knowing, all-giving goddess Mahalakshmi, who scares away all rocks and drives away all sorrows. Very warm greetings to respected principal ma'am, teachers and my fellow comrades. On this pious occasion of Diwali, I Anandita Chaudhary, I, Mohammad Tabish Irfan, I Priyanshi Sonkar, welcome you all to the Diwali assembly organized by the Mandela House. Many seek illumination by lighting a lamp when the true light is within. To start the day, I would like to request our esteemed principal ma'am to light the diyas and commence this delightful event and make the Dipsites aware of the lights we have within. Many seek illumination by lighting a lamp when the true light is within. To start the day, I would like to request our esteemed principal ma'am to light the diyas and commence this delightful event and make the Dipsites aware of the lights we have within. Come, Sanjay, come. Atulima, come. Let the captains also do. Riti. Come, beta. Arade, you also do. According to Hindu mythology, when Lord Ram returned to Ayodhya after his exile, the first thing he did was to worship Lord Ganesh and goddess Lakshmi. Since then, the tradition started to worship Lakshmi Ganesh on Diwali. It is believed that by worshipping Lakshmi Ganesh, we invoke knowledge, wisdom, health, wealth, and prosperity into our lives. कृष्ण महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. On this note, let us offer our prayers to Lord Ganesha with all our hearts and best of our intentions to seek his blessings and love for a beautiful life. We would like to call upon the tiny tots with their spiritual Ganesh Vandana. Diwali is the festival of light. It is one of the most biggest festivals in India. It is the celebration of returning Lord Ram back to Ayodhya after 14 years of exile. We lighted diyas and decorated houses with rangoli. Thank you.
What a beautiful start to this day. Music acts like a magic key to which the most tightly closed hearts open. To glorify this splendid occasion, we now welcome the students of class 1 to 5 with their performance. Give a huge round of applause to these budding talents. Diwali is a 5-day celebration that includes good food, fireworks, colored sand and special candle lamps. But Diwali is so much more than just bursting crackers and all the tasty food. So now we would like to call upon Swara Verma, First D, to present her views on Diwali. सुप्रभात, मेरा नाम है स्वरा वर्मा। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष दीपावली का महत्व बताने हेतु उपस्थित हुई हूँ। भारत में हर एक त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और जब दिवाली की बात आती है तो कुछ अलग ही माहौल बन जाता है। घरों मोहल्ले की सफाई करते हैं, क्या सिर्फ इसलिए ताकि दीपावली के दिन हम गलियों और मोहल्ले को प्रदूषित कर सके। जी हाँ दोस्तों, ये सोचने की बात है, दिवाली का त्योहार सिर्फ पटाखों का त्योहार रह गया है, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि पटाखों के बिना दिवाली बेहतर तरीके से मनाई जा सकती है। दोस्तों, दिवाली का त्योहार परिवारों, रिश्तेदारों के साथ खुशियां बांटकर मनाने का त्योहार है, ना कि पटाखों के उपयोग से पृथ्वी को बर्बाद करने के। अंत में 4 पंक्तियों को संशोधित करते कहूंगी कि दिवाली का पर्व संभल का बनाए, पटाखों का धुआं नहीं दीपमाला जलाए, रंगों वाली रंगोली हो, मिठाई से भरी थाली हो, दोस्तों को दे उपहार, आप बनाए दिवाली बिना पटाखों वाली। आप सभी को मुबारक हो दिवाली का त्योहार। धन्यवाद। Thank you so much, Swara.
Poetry is when an emotion has found its thoughts, and the thoughts have found words. Here we invite Shaila Singh of class 1st D with a beautiful poem. सुप्रभात, मैं शाला सिंह कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने दीपक लगते हैं प्यारे से कविता प्रस्तुत करने में जा रही हूँ। कविता इस प्रकार है। दीपों से महके संसार, फुलझड़ियों के हो झलकार, रंग बिरंगा है आकाश, दीपों के जगमग से यार, हंसते चेहरे हर कहीं, देखते हैं प्यारे प्यारे से। दिवाली के इस शुभ दिन पर दीपक लगते हैं प्यारे से। मुन्ना मुन्नी गुड्डू गुड्डी, सबके मन में हंसी खुशी, बर्फी पे गुलाब जामुन, पर देखो सबके नजर गई, बजते बम रॉकेट अनार पटाखे, दिखते हैं प्यारे प्यारे से। दिवाली के इस शुभ दिन पर दीपक लगते हैं प्यारे से। मन में खुशी चमकते हैं, होठों से दुआ निकलती है, इस प्यारे से त्योहार में आंखों से खुशी छलकती है। दिवाली के इस शुभ दिन पर दीपक लगते हैं प्यारे से। आप सबको दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू शायला। हम सब इस बात से अवगत हैं कि दिवाली प्रभु श्री राम के वनवास के 14 वर्ष के उपरांत अयोध्या लौटने का प्रतीक है। परंतु क्या हम सब जानते हैं कि रावण का जन्म स्थान कहाँ है, या फिर दिवाली को भारत में किस किस नाम से पुकारा जाता है? To develop acquaintance to many such unknown facts about the Festival of Lights, here we invite Afra-Noor. Learn to light a candle in the darkness of life. Be the light that helps others see. It is what gives life its deepest significance. Starting off with a quote by Roy T. Bennett, a very pleasant morning to respected Principal Ma'am, teachers and my dear friends. Today I, Afra-Noor of class 9D, stand before you to deliver a speech on the most awaited festival of the year, the Festival of Lights, Diwali. The very thought of Diwali brings the beauty of rows of lights lit up everywhere, with delicious food at home, new dresses, gifts, messages from well-wishers and unlimited fun with family and friends. The festival celebrated after the summer harvest is undoubtedly the brightest festival of the year. How nice to have a 5-day festival, starting with Dhanteras, worship for well-being and prosperity on the first day, Narak Chaturdashi to mark the killing of evil on the second day, Diwali on the third day, Diwali Parv which celebrates husband-wife relationship on the fourth day, and ending with Bhai Dooj which celebrates brother-sister relationship. For Hindus, Diwali may be a significant day which marks the return of Rama from exile, or the return of Pandavas from exile, or to worship goddess Lakshmi in the name of prosperity, or the worship of Kali in the name of Kali Puja, or it may be the start of a new year in few parts of the country. For Jains, it is a significant day when Mahavira attained Nirvana. For Sikhs, it is a day to remember Guru Har Gobind, who freed himself from the Mughal ruler and arrived at the Amritsar Golden Temple. We have many such stories to tell the significance of Diwali. I'm sure you have your own version and I have mine. Don't you think this enhances the beauty of our country? To have many cultures and rituals and yet celebrate on the same day as a mark of illumination over darkness, a mark of hope over despair, knowledge over ignorance and good over the evil? The fascinating part of Diwali is gifting someone. No, I'm not marketing about any e-commerce website. I'm talking about gifting anything that makes you and others happy. And most importantly, something that works out with very little money. Let us try gifting ourselves with that something which we always wanted to do, but couldn't because of our fear.
Fear is nothing but the ignorance of our own capabilities. Now, doesn't it suit with the theme of our festival? Mark of knowledge over ignorance? Let us replace the negative thoughts or inferiority of one with positive emotions and light up our spirits. How about hoping for a better us and a better tomorrow instead of cribbing over the past? How about banishing the old, disappointing self to bring out brighter and charmer you to life? The reason why I say be the light of your life is because you are very important to yourself and your family. And to the better you is sure to bring more happiness and love. Let me wish you a very happy Diwali wholeheartedly. Enjoy the festival and do give a thought about reforming something. Thank you. Thank you, Afra, for giving us this exquisite knowledge. God moves in a mysterious way, his wonders to perform. He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. Deep in unfathomable minds of never-failing skill, he treasures up his bright designs and works his sovereign will. Ye fearful saints, fresh courage take. The clouds ye so much dread are big with mercy and shall break. In blessings on your head, judge not the Lord by feeble sense, but trust him for his grace. Behind a frowning providence, he hides a smiling face. To convey a similar emotion, we invite the dancers of DPS Jankipuram to rock the stage. नृत्य के आदि प्रवर्तक हैं। उनकी समस्त अंग भंगिमाओं को तंड मुनि अर्थात नांदीश्वर ने लय ताल में पिरोकर अभ्यास किया। तंड मुनि के कारण ही शिव जी का प्रसिद्ध ये नृत्य तांडव कहलाया। That was an exceptionally graceful act. Poems convey the gait of our thoughts and thoughts of our gait. Well said, Anandita. So we invite Vagisha Chitransh with a divine poem.
सुप्रभात। मैं आप सभी के समक्ष दिवाली के उत्सव पे एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब वर्षा परिधान बदलकर शरद ऋतु बन जाती है, धान उड़द की फसल फूलकर कटने को हो जाती है, जब गन्ने के पूर में मिश्री सी घुल जाती है, जब मौसम में सुखद सलोनी हल्की ठंडक छाती है, तब काट उजाला करने दीप दिवाली आती है। साफ सफाई एक नशा बन जब हर घर में छाती है, चूना कूची झाड़ू झालर जब हर घर में आती है, स्वेटर कंबल और रजाई जब माँ धूप दिखाती है, जब सोने का ज्यादा मन हो मगर सुबह हो जाती है, जब सूरज को भी उगने में अंगड़ाई सी आती है, तब काट उजाला करने दीप दिवाली आती है। दीप पर्व के आने से मन मीठा सा हो जाता है, नैया चिरवा और पटाखा सपनों में भी आता है। धनतेरस दिवाली दूज कहीं पटाखों की अनुगूंज, गिरी गोवर्धन गणपति के संग माता लक्ष्मी जाती पूज। श्रद्धा और सफाई स्वागत गीत नवल जब गाती है, तब काट उजाला करने दीप दिवाली आती है। पर्यावरण सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी, ना बारूद हवा में गोले फैलाए ना लाचारी, ना बारूद हवा में गोले फैलाए ना लाचारी। क्या अर्थ है इसका? इसके दो अर्थ हैं। पहला कि हम लोग इतने भी लाचार नहीं है कि किसी चीज की वजह से हम अपनी दिवाली रोक दें। दिवाली से चीजें हैं, जैसे कि पटाखे, ना कि चीजों से दिवाली है। दूसरा, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो पटाखों के बारूद की वजह से तकलीफ में रहते हैं, जैसे कि ना बारूद हवा में गोले फैलाए ना लाचारी, उनका भी हमें ध्यान रखना है। अलौकिक मिट्टी के दीपक तरल तेल दृढ़ भाती हो, गौ गोवर्धन गरिमामय हो और स्वदेशी थाती हो। पर उपदेश त्याग जब दीपक स्वयं प्रकाशित होता है। अब इसका क्या अर्थ है? हम लोग दूसरों से तो कहते रहते हैं कि आप पटाखे मत जलाइए, आप प्रदूषण मत फैलाइए, कुछ ना करिए, परंतु क्या कभी हमने स्वयं चिंतन किया है? नहीं। जिस प्रकार दीपक दूसरे दीपक से नहीं कहता है कि तुम जलो, बल्कि खुद जलता है और पूरे संसार में रोशनी फैलाता है। पर उपदेश त्याग जब दीपक स्वयं प्रकाशित होता है, तब स्वयं विलोपित होता पंथ प्रकाशित होता है। विजय भाव उत्साह लिए जब ज्योति स्वयं मुस्काती है, तब काट उजाला करने दीप दिवाली आती है, तब काट उजाला करने दीप दिवाली आती है। धन्यवाद। Thank you for such an enthusiastic rendition. दीप जलाने में ही दीपावली का अर्थ सिमट ना जाए, दीप जलाने में ही दीपावली का अर्थ सिमट ना जाए, करे धरा पर कुछ ऐसा कि प्रकाश मिट ना पाए। पाप रोग शोक ने घेरा हमको, छाया घना प्रदूषण, गूंज पटाखों की छोड़े हम पहने हरियाली के आभूषण। मन के अंधकार को मिटाकर आत्मा करे प्रकाशित, सद्भावों की ज्योति जलाएं, प्रेम भाव सब में फैलाएं। तम के राक्षस को संघारे तब लगेंगे दीपक प्यारे, स्वच्छ रहे घर आंगन सारा देश, तभी होगा समृद्धि शीलता और लक्ष्मी का प्रवेश। दीपक लेकर हाथों में करे यही संकल्प, दीपक लेकर हाथों में करे यही संकल्प, वृक्ष लगाए कदम कदम पर जीवन रक्षक यही विकल्प। माटी के नन्हे दीपों को करे प्रज्वलित, सारे दोषों को दूर करें, देश करे आलोकित, देश करे आलोकित। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो रंगमंच पर नहीं परंतु सार्वजनिक स्थलों पर खेला जाता है। इसके द्वारा कहानियां नहीं परंतु सामाजिक परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है। ये केवल नुक्कड़ नाटक नहीं, हमारा विशेष संदेश है। अब मैं अपने साथियों को एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी।
के बच के रहना। तो आइए कुछ मित्रों से मिलवाते हैं, देखें वे दीपावली कैसे मनाते हैं। और मित्र कैसे हो? सब बढ़िया, 30-40 हजार के पटाखे लाया हूँ। आओ भाई पटाखे जलाए, मिलकर थोड़ी धूम मचाए। सुनो सुनो सुनो, अरे भाई सो रहे हो तो जाग जाओ। आज की ताजा खबर आप नहीं जानते, हम आपको बताएंगे। पटाखे बनाने वाले मजदूर बच्चों का हाल हम आपको बताएंगे। लाखों गरीब बच्चों को इन कारखानों में धकेल दिया जाता है, जहाँ इनसे अधिक काम कराया जाता है और तो और उचित पारिश्रमिक भी नहीं मिलता। क्या आपके हाथ कटे हैं? नहीं। क्या आपकी आंखों में जलन होती है? नहीं। क्या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है? नहीं। क्या आपका चेहरा जला है? नहीं। पर हम बच्चे जो इन कारखानों में रोज काम करते हैं, रोज इन चीजों से जूझना पड़ता है, जिनकी वजह से आप हजारों के पटाखे फूंक रहे हैं। देखिए, सोचिए, इनकी हालत से काम उठ गया। रोज हजारों लाखों बच्चे जाते हैं ढकेले, जो बनाते हैं पटाखे और बम के गोले। इन पटाखों की आवाज आपके चेहरे की खुशी का राज। कुछ घंटों की आतिशबाजी प्रदूषण की मात्रा को 50 से 100% बढ़ा दी। अपनी करने एक रात रोशन अंधकार में ढकेल देते हैं इनका जीवन। दीपावली में आप अपने घर तो साफ कर लेते हैं, पर सड़कें क्यों गंदी छोड़ देते हैं? दीपावली पर्व है अंधकार से उजाले की ओर जाने का। क्या लता रूपे अंधकार को जड़ से मिटा देने का। तो आओ एक ऐसा दिया जलाएं जो हमारे जीवन की सोच को रोशन करे। आई दिवाली दीप जलाओ, दूर करो अंधकार। आई दिवाली दीप जलाओ, दूर करो अंधकार। आओ मिलकर प्रण लेते हैं, घरों को दियों और रंगोली से सजाए। घरों को दियों और रंगोली से सजाए। परिवार के सदस्यों के साथ दीपावली मनाए। परिवार के सदस्यों के साथ दीपावली मनाए। गरीबों की मदद करें। गरीबों की मदद करें। वृक्षारोपण कर हरियाली बढ़ाए। वृक्षारोपण कर हरियाली बढ़ाए। प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाए। Say no to crackers. धन्यवाद। Wow, that was really very impactful. To end this day on a soulful note, we call upon our school choir to present before us a melodious song. Bye.
Can we have a huge round of applause for this splendid performance? Now, I would request Principal Ma'am to kindly give away the certificates of Inter-House Cricket Tournament conducted on 30th October. So now let me take the privilege of announcing the winners. The first runners-up award goes to the Tagore House. Will you please invite the winners to receive their certificates? Prabhup Singh, Ishit Goswami, Arsh Manan, Abhinav Singh, Kovid Singh. Audience, can we have the applauses going? Tagore House Warden and Deputy Warden, ma'am, can we please have you on stage for the photograph? The first position is secured by Bradman House. Congratulations, Bradman. Shantanu Banerjee, Aditya Mishra, Prakash Srivastava, Prakash Rawat. Bradman House Warden and Deputy Warden teachers, can we please have you on stage for the photograph? Audience, please give a huge round of applause. They have worked really hard. Congratulations to the winners. Now, we need blessings and guidance of our elders at all times. So we request our Honorable Principal Ma'am to address the gathering. Who's that? I'm so happy for me coming at the podium. Any which way, before I address the gathering on the occasion of Diwali, I think there is one more award to be given here. Sanjay, may I have that, please? So, there was a award ceremony organized for the teachers all over. As we all know, the past 2 years, there was one fraternity which showed that we can overcome any challenge. That was the teaching fraternity. So before I announce, students, may I have a big round of applause for all the teachers. So there was an award ceremony organized by CBSE and other organization. And I was asked to nominate 3 teachers. I would have wanted to nominate. In fact, I would have wanted to nominate all my teachers because I know. But then, if we have to pick and choose, there were different factors that were very clear in my mind why I was choosing. And then I guess after the nominations were done, those teachers were asked to fill in certain forms and this thing, whereby they had to list their own specific strategy which they thought was commendable. And that is why, children, this is a lesson for you and for the teachers all together here. When you are, I will not use the word fighting, it's a very strong term, but when you're vying for a position or something, you should give it all 100% of yours. Because I asked the organizing school why my all teachers did not get. Why didn't all the 3 people? She said, Neeru ma'am, don't get angry. You just see the forms. I'll share with you what they had filled. Some maybe took it casually. I mean, the other 2 maybe took it casually. But one person did it with her
all her like heart and soul. So naturally the selection was done. My voice is quite loud and clear. Any which way, my voice is loud and clear. So on that basis, they selected, and the selection panel was quite huge. And today I feel so proud to share that the teacher who won the award for the, may I read that title please? For the Inspired Resilient Teacher of the Year, Miss Monica Rani. Can you have your Monica? Oh yeah. So I would like to announce the name once again. It's Miss Monica Rani for Inspired Resilient Teacher of the Year. Now, getting an award does not take away from you all the efforts that you do, but then award is won by a person who just goes that 1 extra inch, right? And that's what happens in the competitions also. Everybody participate, but you should participate to win. On that note, beautiful, beautiful message conveyed across by different speakers who came here through poems. I still call it poem, I'm sorry, because the year I got my education, it was pronounced thus, right? So, and by the speech on Diwali, we are very clear. Thank you children for bringing home the message. Yes, right now, the air is as it is polluted and it is troubling many. Let us curb on a desire just for the sake of the fun of the moment. Let us not pollute the environment. However, we know 2 years have gone by and a lot of wishes and to celebrate joy and everything is there in the hearts of the children. I just want you children to be a little more responsible when you be doing the shopping, to cut down on the crackers and to invest in the plants, to cut down on the unnecessary spending and to invest in giving something to those children who are not as privileged as you. And I know and I'm sure and I'm very, very confident here that you will take this message home and practice it. Yes, right? Okay, and to the 3 beautiful compares, come here. Beautifully handled assembly. Very well done. When anybody speaks very well at the podium, my heart and soul goes out because that is what we are all aiming. Our children to be the best at the art of communication, which is, as we all know, is the prerequisite of success in future. Right? So invest in your time, to watch things that will help you to grow your communication skills. I'm a teacher at heart, so lessons always goes hand in hand. Tagore House, I think Sanjay? Mandela, I'm so sorry. I always goof up on that, but I'm sorry. Mandela, please may I have the house warden and the deputy house warden and the tutors and tutoresses of Mandela. This was a very well synchronized assembly, brought beautiful messages home and made us feel so happy, so joyful, so proud, and leaving us with just the right sentiment. That is, we are going today to celebrate Diwali. I wish a very happy, a very safe, a very contributive Diwali to all my students and to all my teachers. Thank you children for being a part of my life. Thank you teachers for being a part of my life. And I wish and pray that I continue to be a part of yours if you wish. Thank you so much.